मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, उससे रिलेटेड न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के टॉप डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या के बारे में और इससे निपटने के तरीकों के बारे में भी। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our diabetes awareness series, we have Dr. Abhish Bhujbal with us. Dr. Abhish Bhujbal फुरसुंगी पुणे में पिछले 5 वर्षों में बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट में से एक हैं। उन्होंने एमबीबीएस भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सांगली से और एमडी मेडिसिन फ्रॉम डीवाई पाटिल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पिंपरी पुणे से पूरा किया है। वर्तमान में आप भुजबल हॉस्पिटल पुणे, नोबल हॉस्पिटल पुणे और यूनिटी हॉस्पिटल सासवाड़ में प्रैक्टिस करते हैं। So welcome to Medicircle, Dr. Abhish. How are you today, sir? Very fine, ma'am. Hello, thank you. Yeah. Great. तो शुरू करें इंटरव्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है हर पेशेंट के दिमाग में जो डायबिटीज के बारे में जानना चाहता है, वो ये है कि उसकी एवरेज ब्लड शुगर वैल्यू क्या रहनी चाहिए। So नमस्कार सबको। First of all, diabetes has become very common disease in India. It's called like capital for diseases. It is very common disease. Like overall world में सबसे ज़्यादा चाइना में सबसे अधिक प्रमाण में डायबिटीज देखा गया है, और सेकेंड रैंक पे हमारा भारत है, जहाँ पे डायबिटीज बहुत कॉमन दिखाई दे रहा है पेशेंट्स में। रिसेंटली कोविड में भी डायबिटीज का बहुत ज़्यादा स्प्रेड डायग्नोस हुआ है डायबिटीज। सो बेसिकली डायबिटीज बीटा सेल डिसफंक्शन से हो रहा है पेशेंट्स में। सो उसके कारण पेशेंट्स का शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है। और जैसे आपने पूछा, एवरेज ब्लड शुगर शुड बी फास्टिंग शुड बी अराउंड 80 to 126 mg per dl, and postprandial, that is after food, it should be around between 140 to 180. So anything above 180 is a diabetic patient, and anything for a postprandial, and anything above 126 mg per dl fasting sugar levels are considered as a diabetic patient. Also HbA1c levels, that is glycogenated hemoglobin, जो खून में शुगर कैरी करता है, जो हमारा हेमोग्लोबिन, तो इट शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड और मेजर्ड एवरी 3 months, एंड इट शुड बी अराउंड लेस देन 6.5%. If it exceeds more than 6.5%, it is considered as a diabetes. ओके, तो आपके हिसाब से हर 3 महीनों पे हमें चेक कराना चाहिए, और ये जो इसकी संख्या है वो 6.5 आपने बताया % या ओके, इस पे होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो डायबिटीज है। सो एक डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर साहब खाना क्या चाहिए, उसके खान पान में क्या चीजें होनी चाहिए? सो बेसिकली अ डायबिटिक पेशेंट should always eat high fiber diets, and he should always prevent bakery products. He should at least eat 1 gram per dl per kg body weight proteins in his diet. मतलब according to his weight, जितना weight उनका है उतना ही weight का उन्होंने mg per kg body weight, gram per kg body weight प्रोटीन खाना चाहिए दिन में, एंड हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, जिससे कि उनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बॉडी में अच्छे से काम करे, नॉर्मल वर्क करे। एंड ऑल्सो फ्रूट्स में he should eat low glycemic index fruits such as apple, anar, pomegranate, then citrus fruits. That's it. Fruits में fruits which he should avoid are mango, then custard apple, chiku, bananas, which are high glycemic index fruits and which can increase his blood sugar levels. Also, patient should do daily exercises. Basically, he should exercise for 30 to 40 minutes daily, which should consist of cycling, jogging, running, or normal aerobic exercises. Swimming is also best exercise for a diabetic patient.
जी, ओके। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं यहाँ पर, और चाहते हैं कि व्यक्ति एक्सरसाइज करे, बैलेंस फूड खाए, और ऑफ कोर्स ध्यान रखे कि जिन चीजों से, जिन फलों से स्पेशली शुगर बढ़ती है, उन्हें अवॉइड करें। तो ये कुछ खास चीजें आपने बताई। सर, क्या कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर एनी पेशेंट्स जो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए? Yes, as per the guidelines, you should consult your diabetologist and physicians regularly. Even if you are having any family history of diabetes, say your first-hand relative like your father, mother, and your grandparents, grandmother, grandfather, or your brother, sister is having diabetes, you should screen yourself at least once a year. And basically, Question was resources available to help control diabetes. yeah. So the resources are like OHs, which are oral anti-diabetic drugs, and insulins. Oral diabetic drugs are basically classified into biguanides, meglitinides, thiazolidinediones. Uh, Newer anti-diabetic drugs are DPP4 inhibitors and SGLT2 inhibitors. ये आपके डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस आपको प्रिस्क्राइब करेंगे. एंड सपोज योर Right. HbA1c, as I had mentioned, if it would be above 6.5 and crossing around 10%, then they might start you with insulin pens, which can be taken once a day or twice a day as per the physician prescription. तो ये डायबिटीज कितनी ऑफन या कितने रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर की जानी चाहिए हर पेशेंट के द्वारा? So diabetes is known as a silent killer. It can cause micro level complications and macrovascular complications. Basically, it can affect your eyes, your vital organs of bodies like your eyes, heart, brain, kidneys, and your peripheral nerves. So it should be monitored. Like once a month, you should go for BSL fasting levels and postprandials. खाना खाने के पहले मतलब फास्टिंग, और पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर. तो बेसिकली फास्टिंग शुड बी 8 आवर फास्टिंग, मतलब रात का खाना खाने के बाद सुबह जो 8 घंटे बाद शुगर चेक करना है, वो होता है फास्टिंग वाला शुगर. तो एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड, इट शुड बी लेस देन 126. एंड regularly it should be monitored. So HbA1c should be monitored every 3 months. And other vital organs, like I had said, eyes we should look for fundus. Ophthalmologist will look for any retinopathy. If there are any changes of retinopathy, diabetic retinopathy, हमने बहुत कॉमनली सुना है कि उनको शुगर था और अचानक से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और आई साइट चली गई. So it is like emergency. So we should control your sugars and maintain your sugar levels in the optimum range. Again, kidneys should be thoroughly scanned. You should do your RFTs, renal function tests, every 3 monthly or 6 monthly. If you are a diabetic patient, um, and your creatine should be always less than 1.4 mg per dl. Again, other things are like commonest symptom of diabetes is neuropathy. उसमें क्या होता है, तो हाथ पाँव में अपना एक्सट्रीमिटीज में पूरा सेंसेशन, नमनेस हो जाता है. मतलब झंझन हो जाता है. यू फील लाइक यू आर हैविंग एनी tingling sensation in your extremities. So if your sugars are within normal range, it won't happen. But if it is above the normal range, it can affect your peripheral nerves, which will cause those numbness sensation. So all those things, your foot should be examined. आपके फुट में कहीं पे वुंड है क्या, अल्सर है क्या, वो देखना है. बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स हैव पेनलेस न्यूरोपैथी. सो जो अल्सर हो जाता है पैरों में, बहुत बार ऐसा होता है कि पैरों में अल्सर हो गया है और पेशेंट को पता ही नहीं चला है कि उसको अल्सर हुआ है, वुंड हुआ है पैरों में. सो इट अल्टीमेटली लीड्स टू गैंग्रीन, और दुर्भाग्य से उनका पैर काटना पड़ जाता है, एम्प्यूट करना पड़ जाता है.
So it shouldn't happen, and you should thoroughly do your blood checkups and sugar levels every half yearly, and as per your diabetologist consultation. बहुत सारी काम की बातें आपने बताई और ये भी आपने ये जताया कि इसकी गंभीरता के कारण कितने सारे और विभिन्न अंगों पे इसका असर जाता है, और इसलिए हमें 3 मंथ्स पे वो टेस्ट कराने चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी हर 6 महीने पर अगर आप एक ब्लड टेस्ट कराते हैं और शुगर की मात्रा जांचने की कोशिश करते हैं अपने शरीर में, तो वो आपको सेफ रख सकता है और आप आने वाले डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या उसे उसके प्रति अवेयर रह सकते हैं। तो सचेत रहना चाहिए आपको इसके लिए। और बाकी तो आपने सारी जानकारी दे ही दी है कि कितना ज्यादा इसका दुष्प्रभाव होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर फॉर आवर विद आवर ऑडियंस? कुछ आप आखिरी में संदेश देना चाहेंगे हमारे देखने वालों दर्शकों के लिए? यही बोलना चाहता हूँ कि रेगुलरली आपके फिजिशियंस को कंसल्ट करिए if you are having any symptoms related to diabetes, like neuropathy. बेसिकली डायबिटीज में सिम्टम भी 70% पेशेंट में होता ही नहीं है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज। इसीलिए इफ योर फैमिली मेंबर हैज अ डायबिटीज, डेफिनेटली डू वंस अ ईयर योर ब्लड चेकअप्स एंड योर विजिट टू योर डायबिटोलॉजिस्ट और योर फैमिली फिजिशियन। सो यही चाहता हूँ कि एवरीबडी स्टेज हेल्दी, स्टेज फिट। थैंक यू मेडिसर्कल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you, Aprajita ma'am, and taking my interview and making this occasion. Thank you Thank you, so ma'am. much. I know you were so occupied with work, so I can understand. But Right. thank you so much for coming on our show and sharing your valuable times and insights here at Medicircle. So it was Thank you, really a ma'am. pleasure having you today. Thank you. Thank you.